In this lecture, we will see applications of Laplace transform. Already we have seen all the theoretical part of Laplace transform, and as well as already we have seen inverse Laplace transform theory. And using both the theories, we will see how to apply this Laplace transform to solve some kind of differential equations. Okay, you know that when we are solving any differential equations, we have to see which type of that differential equation have, and according to its type we will decide the method, and according to that method we will solve the differential equation. But the beauty of this Laplace transform is when you apply Laplace transform on any differential equation, the differential equation will convert into algebraic equation. And we know that algebraic equations are very much easy than the differential equations to solve. And therefore, we have to see how to solve differential equations by using Laplace transform. Alright, so before we proceed, let us revise some required formulae of Laplace transform. We need one formula, that is Laplace transform of f double dash t. This double dash means it's a second derivative of f. So it's a formula. How to remember the formula of Laplace transform of second order derivative? So we know that the derivative is of order 2, therefore its Laplace is, you write first s, then what is the order of derivative? That is 2, so you take the power of that s is 2, into Laplace transform of the original function. Here original function is f of t, so you write this Laplace transform of f of t. Minus is compulsory. Now you reduce the power of s, so it will only s, into, you write original function at t equal to 0, that is s into f of 0. Then you write one more minus, then you reduce again a power of s, then it will become 0, power is 0, and anything raised to 0 is 1, and this is 1 into, you raise the derivative of original function, so it is f dash at t is equal to 0. So suppose if I am finding the Laplace transform of third derivative, so here you may write s cube Laplace transform of original function f of t minus reduce the power of s by 1, so it will become s square f of 0 minus again reduce the power of s, that is s into f dash 0, and again one more term we'll write, that is minus f double dash at t equal to 0. तो ये जो है ये फॉर्मूला है हाउ टू गेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, और इसका इस्तेमाल हम हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त करेंगे. ऑलराइट, सो लेट अस सी एग्जांपल. Now I want to solve this differential equation y double dash plus 25y, this is 25, this is plus, is equal to 10 into cos of phi t, cos of phi t. And this differential equation is with conditions. There are some initial conditions. Y of 0 is equal to 0, not 0, it is 2, and y dash 0 is equal to 0. So we have to solve this differential equation by using Laplace transform. So I'll explain how Laplace transform method will work for this differential equation. So first you write given differential equation as it is.
So it is given differential equation is y double dash plus 25y is equal to 10 into cos of 5t. Okay. Now apply the Laplace transform for both sides. Apply the Laplace transform. So when you apply the Laplace transform on this first term, and this is the 2 times derivative of y, so its answer should be s square into Laplace transform of original function, that is y, and I am denoting this is y bar. So y bar is the Laplace transform of y, minus reduce the power of s, then y at t is equal to 0, and one more reduce the power of s, that is s raised to 0, that is 1, and it is y dash 0. So these are the 3 terms which indicating Laplace transform of y double dash. Plus 25 is a constant, we are taking outside the Laplace operator, and Laplace transform of y is y bar is equal to this 10 keeping as it is, and we know that Laplace transform of cos 5t, 5 is a constant multiplied to t inside the cos, and its formula is s upon s square plus square of 5, that is 25. Okay. ऑल राइट, चलिए y ऑफ 0 कितना है 2, वो हम यहाँ रखेंगे, एंड y डैश 0 इज 0, वो हम यहाँ रखेंगे. तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, s स्क्वायर y बार माइनस 2s because y of 0 is 2, y dash 0 is 0, and this is plus 25y bar is equal to 10 times s upon s square plus 25. Now I am interested to find the value of y bar, so transfer this middle term minus 2s to that side, और y bar की टर्म हम एक तरफ लेंगे और y bar कॉमन निकालेंगे, तो हमें मिलेगा s square plus 25, this y bar should be common, equal to 10s upon s square plus 25 plus 2s. Now what is the y bar? Y bar is equal to transfer this bracket to right hand side, तो ये बन जाएगा 10s divided by s square plus 25 into s square plus 25, that is bracket square, plus 2s divided by s square plus 25. So this is the value of y bar having 2 terms in the right hand side. But to solve the differential equation means to find the value of dependent variable which is present in the differential equation. तो इसका मतलब हमें y की वैल्यू ढूंढना है, और ये है y bar. Y bar मतलब it is a Laplace transform of y. So to get the value of y, I should use inverse Laplace transform on both sides. So let me call this expression is an equation number 1, and I would like to apply inverse Laplace transform on these 2 sides of equation number 1. So when I apply inverse Laplace transform to the left side, we know that y bar is a Laplace transform of y. So tell me, what is the inverse Laplace of y bar? Definitely it is y. So left side will become y equal to inverse Laplace operator. Now I am putting what is that first term, 10s divided by, so I am writing 10s divided by s square plus 25 whole square plus inverse Laplace of second term of the right hand side, that is 2s upon
a square plus 25. Right. Now our target is to find inverse Laplace of these two terms. सेकेंड टर्म की तरफ मैं देख रहा हूं तो मुझे नीचे दो टर्म दिखाई दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 25 एंड आई नो 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 और ऊपर 2s है, इस 2 को तो मैं बाहर ले सकता हूं तो ऊपर बचेगा s एंड जस्ट आई एम रिमेम्बरिंग s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका है? तो ये फॉर्मूला है cos ऑफ 5t का। इसका मतलब इस 2 को अगर मैं बाहर लेता हूं तो जो बचेगा वो cos ऑफ 5t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो ऑब्वियसली उसका इनवर्स लैप्लास क्या आएगा? cos ऑफ 5t। इसका मतलब सेकंड टर्म का आंसर ऑलरेडी मैं जानता हूं, तो ये आ गया 2 बाहर और जो अंदर बचेगा वो है cos 5t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसलिए उसका इनवर्स लैप्लास आएगा cos ऑफ 5t। ओके, सेकंड टर्म का तो काम तमाम हो गया, लेकिन फर्स्ट टर्म अभी बाकी है और इस फर्स्ट टर्म का इनवर्स लैप्लास निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बिकॉज हमारे पास लैप्लास के सिर्फ 5 फॉर्मूले अवेलेबल है। एक है t रेज टू n का, जिसमें डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आता है s रेज टू समथिंग, यहां सिंगल टर्म नहीं है। दूसरा है cos, तीसरा है sin, चौथा है हाइपरबोलिक cos, पांचवा है हाइपरबोलिक sin। और ये सभी के फॉर्मूले जो है उसमें सिर्फ ये चाहिए था, ये स्क्वायर नहीं चाहिए था, तो ये स्क्वायर आ गया। तो आपको मैं एक बात बता दूं इधर कि आप जब 1 अपॉन x का डेरिवेटिव लेते हो ना, डेरिवेटिव, तो इसका डिनोमिनेटर का पावर बढ़ जाता है। इसका आंसर डेरिवेटिव का आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पर भी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये किसी न किसी का डेरिवेटिव है। तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि ये डेरिवेटिव किसका है। ओके, तो अगर मैं ट्रायल एंड एरर मेथड पर यहाँ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 25 लेता हूँ, जैसा ये x लिया था, और मैं इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s लेता हूं, तो इसका आंसर आएगा -1 अपॉन जो भी नीचे है उसका स्क्वायर इनटू चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर प्लस 25, दैट इज 2s। सो आई विल गेट द फाइनल आंसर इज -2s divided by s square plus 25 whole square। ओके, लगभग ये और ये सेम दिख रहा है, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ मुझे 10s चाहिए। तो क्या आप इसको 10s बना सकते हो? तो मैं कहूँगा यस, हम बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय -5। अब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा -5। सो ये हो जाएगा व्हाट, 10s अपॉन s स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर, एंड द लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम d by ds of what is this, -5 upon s square plus 25. All right, so this is the way. Now the problem is I want to find inverse Laplace of this side. Okay, so now I am operating this inverse Laplace to both sides, inverse Laplace. Now this left hand side can be written as L inverse. This minus sign you can take outside the derivative. Oh, you just take the minus sign only common. Okay, तो माइनस साइन हमने लिया। ऑल राइट,
तो अंदर बचा d/ds ऑफ 5/s² plus 25. And we know that this is the Laplace transform of sin 5t. Alright, so it is equal to L inverse of minus d/ds of Laplace transform of sin of 5t. This one. अगर आपको याद है कि अगर हम किसी फंक्शन को t से मल्टीप्लाई करते t से, तो उसका आंसर आता है माइनस इनटू d/ds ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन. अब ये फंक्शन है, इसका मतलब इसका इनवर्स लैप्लस आएगा t इनटू साइन ऑफ 5t. देखिए ये t है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म के थ्योरी के हिसाब से इसका आंसर आएगा -1, क्योंकि एक t है, इसलिए एक डेरिवेटिव आएगा d/ds, और उसके अंदर आएगा इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म जो कि है 5/s² plus 25. So that's why this is the way to get the inverse Laplace of this first term. तो हमें फर्स्ट टर्म का भी इनवर्स लैप्लस मिला, सेकंड टर्म का तो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, तो हमें फाइनल आंसर लिखने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमारा फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल टू t इंटू साइन ऑफ 5t प्लस द सेकंड टर्म 2 इंटू cos of 5t. So it is, our answer is, therefore required solution is y is equal to t into sine of 5t plus what is the 2 into cos of 5t, 2 into cos of 5t. देखिए कितना आसानी से और कितना आराम से हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और उसके फाइनल आंसर तक उसको अंजाम दिया. एंड ये जो इजीनेस हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ लैप्लस ट्रांसफॉर्म की वजह से हो गया. सो अगले वीडियो में हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हम लैप्लस ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे टू सॉल्व more and more equations.